Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 20th November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article of the day is about the Bali Yatra. Now, this was actually mentioned by the PM Modi when he was at Bali for the G20 summit. तो उन्होंने बताया था about the Bali Yatra, which means voyage to Bali. Now, this is Bali Yatra, which is one of the country's largest open air fairs that commemorates the 2000-year-old relation between India and Southeast Asia. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे about the Bali Yatra. So this can be important for our prelims, and from GS paper 1, the informations can be important for ancient Indian history point of view, has been taken from the Indian Express. तो देखिए what is Bali Yatra. As you can see, this is kind of an open fair. ठीक है, तो recently the PM in his address to the Indian diaspora, that is the people of Indian origin and Indian who are basically living in Bali, on the sidelines of the G20 summit, mentioned the annual Bali Yatra के बारे में on the banks of the Mahanadi in Cuttack. तो महानदी, you must have heard about this river, which is basically a peninsular river. तो ये उड़ीसा में पाया जाता है. तो ये कटक जो सिटी है, तो वहाँ पे सेलिब्रेट होता है बाली यात्रा. ठीक है, now this basically celebrated to commemorate the age-old links between the एंशियंट कलिंगा. तो कलिंगा के बारे में शायद आपने सुना होगा. दिस इज द आप कह सकते हो एम्पायर डायनेस्टी व्हिच बेसिकली रूल्ड इन द ओडिशा रीजन. ठीक है, इन द एंशियंट हिस्ट्री टाइम्स एंड आल्सो बिटवीन द साउथ ईस्ट एशिया. बाली यात्रा ऑफ 2022 जो है, इट आल्सो फाउंड प्लेस इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर अचीविंग एन इंप्रेसिव फीट ऑफ ऑरिगेमी. ऑरिगेमी जो है, इट इज बेसिकली द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल पेपर स्कल्पचर. तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो बीन एनलिस्टेड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. सो दिस एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं. सो बाली यात्रा जो मीनिंग है, इट इज बेसिकली वॉयज टू बाली. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, या जो आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया के साथ जो टाइज है, जो कल्चरल एंड जो कमर्शियल टाइज है, अब इसी को कमेमोरेट करने के लिए दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर. So Bali Yatra, as I was saying, is an open air fair. तो you should know open air fair मतलब मेला that we say in the normal languages. तो देखोगे आप बाली यात्रा जो है, it is basically means voyage to Bali. ठीक है, it is the week long event which begins on कार्तिक पूर्णिमा में start होता है, which is basically a full moon night in the month of कार्तिक. ठीक है, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का अगर हम यहाँ पे बात करें और रिगार्डिंग द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द 2000-year-old मैरीटाइम एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द एंशियंट कलिंगा, व्हिच इज बेसिकली इन टुडेज ओडिशा, एंड बाली के बीच में जो रिलेशन है, उससे सेलिब्रेट करने के लिए, उससे कमेमोरेट करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है. द अदर साउथ एंड साउथ एशियन कंट्रीज लाइक जावा, सुमात्रा, तो ये जो रीजन्स है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, आई एम वेरी श्योर यू हैव हर्ड अबाउट दिस आर बेसिकली आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया ओनली, एंड ऑल्सो विद बर्मा दैट इज इन म्यांमार एंड सिलोन, श्रीलंका. तो ये सारा आइलैंड्स के साथ, या आप कह सकते हो कि जो रीजन्स है, तो इनके साथ जो टाइज था ऑफ द कलिंगा एम्पायर, तो इसी को आप कह सकते हो कि ये जो कलिंगा किंगडम है, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वी बेसिकली ऑब्जर्व द बाली फेस्ट. ठीक है, आई एम सॉरी, द बाली यात्रा. So according to the historians, popular items, तो देखिए हम यहाँ पे क्या क्या ट्रेड करते थे. So this is basically naval trade है. ठीक है, जो maritime trade ना, तो it basically took place to the Indian Ocean, and the popular trade items were pepper, then cinnamon, and you will find the cardamom, silk, camphor, golden jewelry. The Bali Yatra celebrates the ingenuity and skill of those expert sailors who made Kalinga one of the most prosperous empires of this time. Kalinga आपको शायद याद भी होगा कि 261 BC के टाइम में यहाँ पे एक वार होता है, and ये जो वार है, now this war basically changes the perspective of the Mauryan emperor, that is Ashoka का. ठीक है, इसके बाद after the bloodshed of the Kalinga war, he basically joined, or you can say basically embraced Buddhism. ठीक है, अगर हम यहाँ पे कमर्शियल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, सो बाली यात्रा हैज अ सिग्निफिकेंट कमर्शियल डायमेंशन इन एडिशन टू इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एलिमेंट्स. ठीक है, सो इट इज अ टाइम व्हेन पीपल परचेज एवरीथिंग व्हेन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू लोकल आर्टिसनल प्रोडक्ट. तो अब ये जो बाली यात्रा जो होता है, बाली यात्रा ये जो मेला में आप कह सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे सामान यहाँ पे लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक. ठीक है, तो इस आप कह सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा प्राइस में दिया जा रहा था विच इज कंपेरेटिवली लो. तो इसी वजह से अब यहाँ पे कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है इस बाली यात्रा का. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज मोर देन 1500 स्टॉल्स यहाँ पे अलाउ करते हैं तो ट्रेडर्स थ्रू एन ऑक्शन के बेसिस पर. द फेयर इज एस्टिमेटेड टू से बिजनेस वर्थ मोर देन रुपीज 100 करोड़ ओवर द पीरियड इट लास्ट. तो ये जो आप कह सकते हो कि ये जो वीकली आप कह सकते हो जो ये फेस्टिवल है या जो मेला होता है, तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं और दे बेसिकली परचेज डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम दिस मार्केट एज वेल, फ्रॉम दिस 1500 stalls which are available at the Bali Yatra.
तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन का बात करेंगे ऑफ कलिंगा एंड द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आप देखोगे ये जो रीजन है जो उड़ीसा है, और उड़ीसा में आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर भी मिलेगा महानदी। सो दिस बेसिक जो ये रीजन है तो इसी में रूल करते थे कलिंगा, ठीक है। कलिंगा वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेवल ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे सिलोन के साथ, देन हियर यू कैन से जावा और बाली, तो बाली के साथ विच इज नाउ करेंटली एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, तो इसी के साथ देयर यूज्ड टू बी ट्रेड रिलेशन। सो द कलिंगा एम्पायर अगर हम देखेंगे दैट इज प्रेजेंट डे ओडिशा इज नोन फॉर इट्स ग्लोरियस मैरीटाइम हिस्ट्री ड्यू टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कलिंगा। अब देखिए क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, दिस एरिया सॉ द ग्रोथ ऑफ पोर्ट्स एज अर्ली एज द 4th and 5th century BC। तो सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स फॉर एग्जांपल ताम्रलिप्ति, मणिकपटना, देन चलितालो, पल्लूर एंड बिथुंदा। तो ये जो सारे पोर्ट्स है दिस बेसिकली लाई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। आप देखोगे दिस एक्चुअली लाई इन अराउंड ओडिशा, करंट ओडिशा ओनली। नाउ दिस पर्टिकुलर पोर्ट्स जो है allowed India to connect with other countries via the sea. Soon the Kalingas had trade links with Sri Lanka, Java. So Sri Lanka, as you can see, this is Sri Lanka, which then was known as Ceylon, then Java, Borneo, Sumatra, Bali, and Burma as well. Bali formed the part of the 4 islands that were collectively called the Suvarnadip. अब ये जो सुवर्णद्वीप है अभी के टाइम में it is known as Indonesia. अगर हम बात करेंगे अबाउट द कलिंगा शिप के बारे में, आप देखिए क्योंकि नेवल ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे जो शिप्स है, नाउ शिप्स विल बी आल्सो सिग्निफिकेंट। द कलिंगा कंस्ट्रक्टेड लार्ज बोट्स कॉल्ड द बोइटास कहा जाता है, ठीक है। आज भी हम ये टर्म आप देखोगे असमीज लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, बोइता मारो, राइट, इज अ सॉन्ग। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस दे ट्रेडेड विद द इंडोनेशियन आइलैंड्स के साथ, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल वेयर वंस नोन एज द कलिंगा सी भी कहा जाता था, जो एंटायर जो बे ऑफ बंगाल है उसे कलिंगा सी कहा जाता था, बिकॉज इट वाज strong with by this Kalinga का जो empire का जो boats है, जो ships है, तो because this is the reason why it was known as Kalinga Sea. The dominance of the Kalingas over the sea routes can be understood from the fact that Kalidas in his Raghuvamsa, remember Raghuvamsa was written by Kalidas, now he referred to the king of Kalinga as the Lord of the Sea. तो Lord of the Sea यहाँ पर represent किया गया है Bay of Bengal को, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया और इंडिया में काफी कॉमन है, एक तो ये इंडियन ओशन एंड ऑल्सो जो यहाँ पे कल्चर है, आप देखोगे जो रिलीजन वगैरह है इसमें बहुत सिमिलरिटी यहाँ पे पाया जाता है। दैट इज आप देखोगे द कलिंगस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड विद द आइलैंड ऑफ बाली, ठीक है। द ट्रेड इन कमोडिटीज आल्सो लेड टू द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, ठीक है। अब ओडिया मर्चेंट जो है दे फॉर्म सेटलमेंट्स इन बाली, जो कि आज के दिन भी पाया जाता है इन रिगार्ड्स टू द आइलैंड ऑफ बाली, एंड दे इन्फ्लुएंस इट्स कल्चर एंड एथिक्स व्हिच लेड टू द ग्रोथ ऑफ हिंदुइज्म इन दिस रीजन, ठीक है। अब देखोगे इंडोनेशिया जो है इट इज मेजरली आप यहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है इज इस्लाम, बट बाली जो आइलैंड ना तो इट इज बेसिकली आप देखोगे वहां जो पॉपुलेशन है इट इज हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द कमर्शियल एंड द कल्चरल टाइज विद द कलिंगा, ठीक है। कलिंगा या कह सकते हो इंडिया के साथ हिंदुइज्म ब्लेंडेड वेल विद द बालिनीज कंसेप्ट एंड इवन द बालिनीज हिंदुइज्म। तो वहां पे जो हिंदुइज्म प्रैक्टिस होता है इट इज नोन एज द बालिनीज हिंदुइज्म, इज प्रैक्टिस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत सारे सिमिलरिटीज है ऑफ द हिंदुइज्म दैट वी प्रैक्टिस एंड द वन दैट इज प्रैक्टिस बाय बालिनीज, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। नाउ दे वर्शिप वेरियस हिंदू गॉड्स सच एज शिवा, विष्णु, गणेश एंड ब्रह्मा। सो दिस पर्टिकुलर हिंदू गॉड जो कि इंडिया में भी आप कह सकते हो कि वर्शिप किया जाता है, नाउ दे आर वर्शिप्ड इन बाली एज वेल। नाउ शिवा वाज कंसीडर्ड टू बी द प्रिजाइडिंग deity and believed to be the elder brother of Buddha. So they basically also tried to establish a relationship between Buddha and Shiva as well. द बालिनीज ऑल्सो सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि शिवरात्रि हो गया, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा। सो दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल जो कि इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, देयर यू कैन से देयर इक्वली सेलिब्रेटेड विद एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ बाली एज वेल। तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about the Amazon rainforest. The Amazon rainforest जो है, it is basically found in the South American continent में. So according to a new report जिसका नाम है Living Amazon Report 2022 by the World Wildlife Fund. तो this important है, कौन publish करता है? तो some 35% of the rainforest is either totally lost or highly degraded. This can be important for our prelims and from means it can be important from GS paper environmental pollution and degradation point of view has been taken from the down to earth. Now this, as you can see in the picture, is the Amazon rainforest. It covers a number of countries in terms of the South American continent. तो यहाँ पे आप देखोगे ये this you should also know it is the largest rainforest of the world, ठीक है। So according to a new report which is termed as a Living Amazon Report 2022 of the World Wildlife Fund, तो some 35% जो है इस rainforest में it is either totally lost or highly degraded. आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कितना forest fires का incident वगैरह न्यूज में आ जाता है with respect to Brazil जैसे countries. The report जो है was released at the COP27 में, जो कि हाल ही में हो रहा था in Egypt में,
right? So the report outlined the current status of the Amazon biome and basin. Biome ka meaning I think you should know, it basically refers to the community of plants and animals that occur naturally in an area, often sharing common characteristics specific to that area only. So ये जो Amazon biome में जो आप कह सकते हो, the report basically outline the current status of the Amazon biome and basin, summarize key pressure and drivers of the changes and outline a conservation strategy भी इसने outline कर दिया है. तो अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, so vast tracts of the Amazon rainforest which serves as a carbon sink. तो I have often mentioned about this term carbon sink in my discussion. Carbon sink होता है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, और नॉर्मली आप देखोगे जो भी कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि कार्बन एमिट करते हैं, तो फॉरेस्ट आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एमिट और दे एब्जॉर्ब दिस कार्बन दैट द कंट्रीज एमिट. सो दिस द रीजन व्हाई इट इज नोन एज कार्बन सिंक कहा जाता है, एंड द प्लैनेट्स लंग्स भी कहा जाता है इनको. ठीक है, नाउ दे आर इन क्राइसिस. सो सम 35% ऑफ द रेन फॉरेस्ट is either totally lost or highly degraded, while another 18% जो है has been converted for other purposes. Normally आप देखोगे this can be attributed mostly to the human interference के कारण, because of the growing population के कारण. Amazon forest जो है threatened due to deforestation and fires and degradation. यहाँ पे forest fires का बहुत सारे instances आता है, and deforestation का केस यहाँ पे बहुत normal है because the population is growing. Surface water has not been lost surface water has been lost, and rivers are increasingly disconnected and polluted. So this is only because of the pollution, and you can see the pressure of the humans that the surface water has been completely lost now. This immense pressure will irreversibly damage the Amazon and the planet in general very shortly. So ये जो damage है, it won't be limited to the Amazon only, or it won't be limited to South American continent only. It will be felt, it will be applicable for the entire world, you should know. Economic activities, most notably extensive cattle ranching and agriculture illegal activities and poorly planned infrastructure threaten the region. तो ये सारा causes हो गया because of the which is leading to the degradation of the forest. ठीक है, now they threaten the region and cause deforestation and degradation throughout the biome, with many areas severely affected. तो यहाँ पे देखिए nearly 600 infrastructure projects are currently in operation. Now these are even though they are causing a development in the particular region, but then they are completely detrimental to the or harmful to the biome of the region, all right, biome of the rainforest. Some 20 planned road project, 400 operating or planned dams बनाए गए हैं, and numerous mining projects continue to dump chemicals such as mercury into the rivers. So you can understand so much of pressure has been laid on, so much of pressure has been exerted on the Amazon rainforest. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया गया है. The protection of the Amazon requires a combination of strategies and approaches that combine conservation requirements with the development. देखिए development तो obviously we have to ensure development, ठीक है, because in the growing times we cannot limit ourselves only for the cause of environment, because the countries are in a rat race to become developed. ठीक है, तो इसीलिए development should be there, but then again there should be some strategies for conservation as well. ठीक है, now strategies for effective integrated landscape management now should include conversion free landscape, the sustainably managed forest and legal trade. Now this should be maintained. Okay, so basically there should be a legality in the trade that has been practiced in the particular region, ensuring the rights of indigenous people who basically live in those regions, the local communities, women and young people as well. These strategies जो है they're intended to complement well managed conservation areas and indigenous territories to form a network of well conserved landscape. Now cross-cutting strategies के अगर बात करेंगे in the three key areas, that is the policies, the knowledge generation and communication जो है now also needed for the conservation and the sustainable management of the Amazon biome, its forest and river. तो देखिए यहाँ पे जो areas है there is policies भी यहाँ पे, और the policies should be on the right track. There should be sufficient amount of knowledge, ठीक है, and also the department, the ministries, now they should also be communicate the regions, or you can say because there are multiple countries, now there should be a kind of communication with all the stakeholders so that the biomes of the Amazon rainforest can be saved. The biome जो है it urgently requires effective policies, research and greater awareness of its current status. तो अभी हम बात करेंगे about the Amazon rainforest के बारे में. तो rainforest जो term है you should know the meaning that it basically stands for the forest which is found in the tropical region. Tropical region में आप देखिए temperature काफी ज़्यादा रहता है, और इसमें because of the higher temperature जो water bodies है वहाँ पे ज़्यादा evaporation भी होता है, and also it leads to more rainfall. तो ये ज़्यादा energy of the sun है, ज़्यादा rainfall के कारण जो है trees है ना they are evergreen in nature. Evergreen
evergreen का मीनिंग ये होता है कि जो वहाँ पे लीव्स है वो झड़ता नहीं है, ठीक है. सो इंडिया में आप यू विल फाइंड द नंबर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. व्हाई? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे रेन फॉरेस्ट वगैरह पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ना रेनफॉल काफी ज्यादा रहता है, ठीक है. सो इसीलिए ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर दी प्लेनेट अर्थ के लिए. सो दिस आर लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एज आई वाज सेइंग, ट्रॉपिक्स, बिकॉज दे आर इन दी रीजन्स जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, दैट इज विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑक्यूपाइंग द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजोन रिवर. दिस यू कैन सी इज द अमेजोन रिवर. अमेजोन रिवर के सराउंडिंग में पाया जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज इन नॉर्दर्न, ये जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, तो यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में पाया जाता है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 6 million square kilometer, and this you should know it is the world's largest rainforest. Tropical rainforest जो है are closed canopy forest growing within 28 degrees north or south of the equator. Now because देखिए यहाँ पे इक्वेटर पाया जाता है, कोई इस रीजन में पाया जाता है इक्वेटर के 28 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में पाया जाता है. और ये जो रीजन है क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है. And they are very wet places receiving more than 200 centimeter rainfall. अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा हुआ आपको पता होगा कि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसका भी जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है इट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल जहाँ पे भी रहता है इट विल बी हैविंग एवरग्रीन फॉरेस्ट. और वही होता है एवरग्रीन जो अपना जो लीव्स है वो कभी इट डज नॉट शेड इट, ठीक है. तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट सच फॉरेस्ट आर इन एशिया में पाया जाता है, देन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, तो ये सारा रीजन पे पाया जाता है आपका दिस रेन फॉरेस्ट आर फॉर्म, ठीक है. टेम्परेचर जो टेम्परेचर इज ऑल्सो जो रिक्वायरमेंट है ये भी ज्यादा रहता है, दैट इज अराउंड 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है. सो रेनफॉल शुड बी हाई एंड ऑल्सो द टेम्परेचर शुड ऑल्सो बी हाई इन दिस रिगार्ड, ठीक है. एंड और ये काफी पैसिफिक आइलैंड्स के केस में पाया जाता है, नॉट जस्ट पैसिफिक आइलैंड, इट इज फाउंड इन इंडियन ओशन का जो आइलैंड है, फॉर एग्जांपल अंडमान आइलैंड्स में भी पाया जाता है रेन फॉरेस्ट. All right, so it basically comprises about 40% of Brazil's total area. So you can look at this जो सब कॉन्टिनेंट है, सॉरी ये जो कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा ब्राजील कंट्री जिसका 40% में बस यही पाया जाता है अमेजोन फॉरेस्ट. और अमेजोन फॉरेस्ट में ब्राजील के केस से काफी यहाँ पे अमेजोन जो रेन फायर्स है, सॉरी जो फॉरेस्ट फायर्स है उसका भी काफी यहाँ पे इंस्टेंसेस सुनाई देता है, न्यूज के न्यूज में आता है, राइट. सो इट इज बाउंडेड बाय द गुयाना हाइलैंड्स ऑन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में पाया जाता है गुयाना हाइलैंड्स, द एंडीज माउंटेन, दिस यू कैन सी इज द एंडीज माउंटेन, राइट. तो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है रॉकी माउंटेन्स और यहाँ पे पाया जाता है एंडीज माउंटेन. तो एंडीज ये से बाउंड करते हैं ऑन द वेस्टर्न साइड, एंड देन यू विल फाइंड द ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेट्यू जो है ये साउथ में पाया जाता है, यहाँ पे कहीं भी मिलेगा ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेट्यू, एंड द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट. सो दिस यू कैन सी इज द अटलांटिक ओशन. सो दिस इज अबाउट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में. The next article is about the Donyi Polo Airport, and yes, finally the much awaited and much anticipated news of the year is finally here, that the PM has inaugurated the Donyi Polo Airport, and this is in reality a historic moment for the state. And not just the Donyi Polo Airport, यहाँ पे साथ ही साथ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया जिसके बारे में हम बात करेंगे. This can be important for our prelims, main GS paper 3 से ये important हो सकता है from the infrastructure point of view, from the tourism point of view, a number of factors से important हो सकता है, also from paper पेपर 2 अगर आप देखोगे तो ये गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. has been taken from the Arunachal Times. So finally, the long wait for the direct commercial air connectivity to Itanagar, the capital city of Arunachal Pradesh, is over, with the Prime Minister Narendra Modi inaugurating the Donyi Polo Airport, Itanagar in Horongi. Horongi, you should know, it is a place which is 25 kilometers away from the capital Itanagar, and he has also dedicated the 600 megawatt Kameng hydro power project, which is on the river Kameng in the West Kameng district, to the nation. All right. So the Prime Minister, as you can see in this picture, he is basically delivering his speech regarding the launching of the Donyi Polo Airport. So the Prime Minister has laid the foundation stone of the airport in 9 February of 2019. So yes, we can आप कह सकते हो, हम यहाँ पे तो एडमिट यहाँ पे करना होगा कि it has been actually been completed in a very short span of time. Right, and drawing an analogy between the light of the sun, to sun, which is basically he means to say about the Doni, and also about the moon, that is Polo, and the development. So he has basically connected the light of the sun and the moon to the development of the state. The Prime Minister has said the development of the airport is as important as the development of the port. He's basically spoken about the inclusive growth in this regard. Donyi Polo Airport, you should know, it will be the 4th operational airport for Arunachal Pradesh. तो बाकी यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स है, देयर मोस्टली एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स है, ठीक है. नाउ इट हैज फाइनली टेकन द
total airport count in the northeast region to 16. Okay, so this is basically a mega event, as you can see in this picture, which has been attended by thousands of people. Alright, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने बातें तो बताया है. ऑब्वियसली जो भी स्टेटमेंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी था जो अपने सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि उन्होंने बताया कि अब देखिए उन्होंने जब इसे इनॉग्रेट किया था, व्हेन द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड इन 2019, तो उन्होंने कहा था कि जो ऑपोजिशन है दे वर बेसिकली लाइक एलिजिंग कि दिस इज बेसिकली अ पॉलिटिकल गिमिक है. ठीक है, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि 2019 में हुआ था लास्ट इलेक्शन, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस ओनली ये मतलब बस करके दिखा रहे. ठीक है, लेकिन फाइनली ही हैज गिवन द रिप्लाई कि ऐसा कुछ नहीं है, इट वाज बेसिकली मेंट फॉर द रियल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. तो इस तरीके से अगर डेवलपमेंट होता है, ऑब्वियसली इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर नॉट जस्ट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बट फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, which is almost you can say which is often isolated from the rest of India, right? तो अभी देखिए, he said that with the development of the new airport infrastructure, it will also create huge opportunities in the field of cargo services as well. तो यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर्स के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कि कार्गो सर्विसेज हो गया. तो अगर मान लीजिए कि जो कार्गो सर्विसेज है अगर ये डेवलप होता है, अगर ये इनहेंस होता है, तो यहाँ पे जो फार्मर्स है, द फार्मर्स विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री, राइट? एंड ऑल्सो हम यहाँ पे जब एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जब हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ऑल्सो वी कैन मेंशन अबाउट द टूरिज्म. ठीक है, यू शुड नो द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, द हिमालयन स्टेट्स आर, दे हैव गॉट अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म. तो इसे भी हम प्रमोट कर सकेंगे थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? अभी थोड़ा बात कर लेते हैं अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट ही हैड लॉन्च इन द सेम इवेंट, दैट इज अबाउट द 600 megawatt coming hydro power station, as you can see in this picture. So the PM has dedicated to the nation the 600 megawatt coming hydro power station, which is implemented by NIPCO Limited. This is very important. NIPCO ने इसे implement किया. NIPCO, that is the North Eastern Electric Power Corporation Limited. It is a mini Ratna power PSU under the Ministry of Power, right? So the 6th hydro power plant है, तो entire Northeast में it is the 6th one, that is 600 मेगावाट का कैपेसिटी है इसका. नाउ दिस विल बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट 2015. अब देखिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे टैकल करने के लिए तो इंडिया ने जो भी कमिटमेंट्स किया है, स्पेशली द एनडीसीज जो है, और आपको पता होगा कि लास्ट जो COP 26 है, मैंने अक्सर आपको बताया है अबाउट COP 26 में उन्होंने बताया था अबाउट पंच अमृत के बारे में, जहां पे द पीएम मोदी हैज सेड, ही हैज अनाउंस्ड इन द लास्ट COP 26 एट ग्लासगो में अबाउट सम टारगेट, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू 50% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द ईयर 2030. और उन्होंने ये भी बताया है अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू रिच 500 गीगावाट बाय 2030. तो ऐसे जो कमिटमेंट्स वो जो करते हैं, जो गवर्नमेंट जो कमिट करते हैं इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स में, तो ये मीट करने के लिए जो टारगेट्स वो अचीव करने के लिए सच अचीवमेंट आप कह सकते हो कि सच डेवलपमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. The project stretches over more than 80 kilometers in West Kamen district of Arunachal Pradesh at a cost of approximately rupees 80-200 crore. The project has 2 dams है इसमें, एक पावर हाउस है having 4 units of 150 megawatt to generate. तो देखिए जो 150 megawatt का जो 4 units है, तो this basically makes up 600 megawatt, right? And will be able to generate 3,353 million units of electricity. अब इतना vast amount of electricity का generation from the project will make Arunachal Pradesh a power surplus state. ठीक है, तो जो पावर कट्स है, जो लोड शेडिंग होता है, होपफुली द स्टेट विल बी एबल टू मिटिगेट दोस थिंग्स इन द अपकमिंग टाइम्स एंड विल आल्सो ब्रिंग अबाउट ह्यूज बेनिफिट्स टू द नेशनल ग्रिड इन टर्म्स ऑफ ग्रिड स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the Gandhi Mandela Award के बारे में. It has been recently awarded, so this can be important for our students. Means के लिए इतना important नहीं है, and it has been taken from the Arunachal Times. So as you can see in this picture, it is Dalai Lama who has been awarded with the Gandhi Mandela Award by Himachal Pradesh Governor Rajendra Vishwanath Arlikar. Now he has bestowed the Gandhi Mandela Award on Tibetan spiritual leader Dalai Lama in a ceremony organized by the Gandhi Mandela Foundation. So there is a foundation which is the non-profit organization है, which is based in McLeodganj in Himachal Pradesh, and it is currently offering, or you can say bestowing the award to Dalai Lama for this year. Arlikar said that the Dalai Lama was perhaps the most deserving person in the world today for the award and called him a universal ambassador of peace. So he has basically compared his achievement, his contribution with the ones of Gandhi and Mandela. And Gandhi and Mandela, you know, they are the peace bearers throughout. They are known for their initiatives of peace throughout the world.
ठीक है, तो इसीलिए उनको यहाँ पे कंपेयर किया गया उनके साथ. His principles of non-violence and compassion are required in today's world, that is of the Dalai Lama, as these are more effective than any army. The Dalai Lama has taken forward the centuries-old culture of goodwill, compassion, and love, he said. So basically, he has congratulated also, the governor has also congratulated the Gandhi Mandela Foundation. He said that only the Dalai Lama had the potential to become a world citizen after Mahatma Gandhi and Nelson Mandela, as he was not bound by borders. Okay? ऐसे टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो, सो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आर. तो पहला ये बताया गया अबाउट द कार्बन पर टैक्स जो कि यूरोपियन यूनियन ने लाया है, एंड अबाउट द यूएनएफपीए का जो पॉपुलेशन एस्टिमेट है, इट हैज बीन 8 बिलियन एंड दिस वाज बेसिकली बेस्ड इन न्यूयॉर्क में, एंड इन विच ईयर वाज द तवांग मेमोरियल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 में. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.